Hello, Assalamualaikum everyone. How are you all doing? Am I audible? How is your guys' preparation? Okay. Why is it going okay, guys? Come on. Okay तो नहीं होनी चाहिए अब. I'm taking out so much time. Okay. So today we are going to overgo chapter 5 and chapter 6. Agar time mila, तो we would be looking at chapter 7 as well. But we are going to be finishing chapter 5 and chapter 6. And then, yeah. Tomorrow you guys will have your class, most probably prepare me. So I think around 2 is when we're going to have our class, okay? Or 1. I'll let you guys know. Okay, so chapter number 5, this deals with your chromosomes, behavior in mitosis and replication and division of nuclei and cells. So let's begin with how your structure of chromosome is sort of is. Your chromosome, if I was to draw it, horrible drawing. This is how your chromosome is. ये जो बीच वाली जगह है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर. Chromatid consists of one have your telomeres that prevent loss of genes. Now, एक क्रोमोसोम के अंदर आपके पास several thousand genes होते हैं. Genes होते क्या हैं? These are lengths of DNA that code for a protein. Now, हम लोग रेफर करते होते हैं कि ओके आपका जीन सॉरी आपके लोकेशन से निकला. इट्स द पोजीशन ऑफ जीन in a chromosome. And now, as you guys remember, in O levels we used to do something such as homozygous है, heterozygous है. That depends कि आपके पास कि वो आपके dominant characteristic है, recessive characteristic है. That's because your genes जो हैं, for example, आपके hair के gene हैं, that would be either coding for brown or black. तो that shows कि आपके gene एक certain gene that's coding for your hair उसकी different forms हो सकते हैं. उसे हम कहते हैं allele. So that is different forms of same gene. These alleles can be dominant or recessive. Now, coming back to chromosomes, जो pair of chromosome होता है, that is called as homologous chromosome. They are found in your diploid cells. क्या कहते हैं? दो identical chromatids in this case, by the way, they are known as sister chromatids. And so they consist of identical copies of genes. However, their alleles can be different. ठीक है? In human, we have 22 pairs of genes which are autosomal, and the 23rd pair is sex chromosome. Now, your chromosome is also involved with a protein that is known as histone, जो उसको structural support provide करता होता है. Okay? Now, let's look at आपका mitosis. Your mitosis is divided in. The first is your interface, जहाँ पे आपका cell is sort of getting ready for the division. ठीक है? Interface क्या होता है? यहाँ पे आपके पास you have some checkpoints and you have your S phase. Now, what is S phase? S phase पे आपके पास DNA replication होती है. ठीक है? In G0 and G1, these are checkpoints. ठीक है? तो for example, अगर कोई errors हैं in your DNA, they are corrected. ठीक है?
यहाँ पे ऑल्सो आपके सिंथेसिस होता है ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स एज वेल एज योर ऑर्गेनल्स। G1 पे स्पेसिफिकली आपकी सेंट्रियोल स्ट्रिप। आपके mitosis is divided into 4 stages, that is PMAT. P is for prophase, M is for metaphase and T is for telophase. अब मुझे कौन बताएगा प्रोफेज पे क्या होता है? आपके डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब प्रोफेज पे क्या होगा? I think you all should know, आप लोगों का पेपर 2 दिन में है. What happens in prophase? Hello? Yes. So we divide prophase specifically into 2 stages. Early prophase में क्या होता है? Your chromosomes ठीक है, and supercoil as a matter of fact, ठीक है, and they start to become to appear as now क्या कहते हैं, sorry, your chromatin starts to coil. Say chromatin are these long strands, they start to coil, supercoil, और इनका स्ट्रक्चर अब क्रोमोसोम बन जाता है. ठीक है, क्रोमोसोम जो हैं these are short and thick whereas your chromatins are these long strands. ठीक है, तो अब आपके पास एक क्रोमोसोम के सूरत में एक शक्ल आ गई है. लेट प्रोफेज में क्या होता है, एज जवेरिया पॉइंटेड आउट, कि यहाँ पे योर न्यूक्लियर एनवेलप disappears. It breaks up into these very small vesicles which are not visible in your light microscope. Your nucleolus also disappears. And your centrioles start to move towards opposite ends of nucleus, जहाँ पे they form poles of spindle. So by the end of prophase, a spindle is starting to form. So like if I was to draw its picture, ये ऐसे ऐसे यहाँ पे आपके पास spindle has started to form. Now what will happen in your metaphase? Metaphase में we have something known as your metaphase plate, that is your equator. So your chromosome, your centrosomes and your centrioles, now they have reached the pole. आपकी spindle fibers are fully formed. And your chromosomes begin to line up at the equator of your spindle. They're attached by their centromeres to the spindle. So, contrary to popular belief, आपके अगर let's say क्या कहते हैं, रुको मैं centrosomes को ऊपर बना देती हूँ. Centrosomes और centromere में mix नहीं करना. Centrosomes form your spindle fiber, whereas centromere is the middle part of your DNA. So ये आपके यहाँ पे मिडिल में आपके पास मेटाफेज प्लेट या इक्वेटर बनना शुरू हो जाती है, जहाँ पे योर क्रोमोसोम स्टार्ट टू लाइन अप. नाउ इसका जो मिडिल वाला पार्ट है, दिस मिडिल पार्ट, इसके साथ स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, तो जब आपकी इन द नेक्स्ट स्टेज जब आपका आता है एनाफेज, उसमें क्या होगा कि योर क्रोमैटिड्स जो हैं दे स्टार्ट टू मूव टू द, अगर ये आप लोगों का क्रोमोसोम है, ठीक है, क्या होगा कि योर क्रोमोसोम स्प्लिट हो जाता है एट दिस सेंट्रोमियर. सो इट फॉर्म्स इनटू अ ऐसे स्ट्रक्चर. ठीक है, और फिर क्योंकि सेंट्रोमियर से आपके स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है,
तो जब हम इसको सेंट्रोमियर से पुल करेंगे तो इसकी कैसे शेप बनना शुरू हो जाएगी, ऐसे वी शेप बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ से पुल करेंगे कैसे, सेंट्रोमियर वुड बी द लीडिंग पार्ट, आपके टेल्स उसके पीछे आ जाते हैं। तो ये आपके क्रोमैटिड्स स्टार्ट टू पुल अपार्ट बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो एनाफेज में क्या होता है, योर centromere of each chromosome divides, sister chromatids split at your centromere and your spindle microtubules to short. ठीक है, अब क्या होगा टेलोफेज में, अब देखो आपके दो chromatids have started to pull apart, they are now going in opposite directions. So what will happen is your chromatids in telophase reach the poles of your spindle. Okay, your remains of spindle is broken down, your nucleolus starts to reform, and your nuclear envelope also starts to reform. Now, final stage क्या होता है आपका cytokinesis क्या होता है, that is the division of your cell cytoplasm. Now, this differs in your animal cells and plant cells because of a certain structure. Animal cells में हमारी जो outermost layer है वो क्या होती है, that is our cell membrane. तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक drawstring effect कहते हैं. Basically, what happens is a cleavage furrow forms. ठीक है, your cell membrane, they are drawn together by a contractile ring of microfilaments जो आपका क्लीवेज फर्रो फॉर्म करवा रहे हैं. ठीक है, और ये जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इवेंचुअली योर सेल मेम्ब्रेन जो है, अगर लेट्स से ऐसे है, ये पिंच ऑफ हो जाता है आपका, ये कॉन्ट्रैक्ट करते जाएंगे एंड देन यहाँ पे आपका सेल मेम्ब्रेन इवेंचुअली फ्यूज हो जाएगा एंड सेपरेट हो जाएंगे आपके सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स. लेकिन प्लांट सेल में क्या है, प्लांट सेल में तो हमारे पास cell membrane is not the outermost layer, we have something known as a cell wall. So because of the presence of cell wall, your cleavage furrow will not form. Instead, what happens in plant cells, ke vesicles are transported to your equator and they will form a cell plate, which will eventually form a new cell wall. So आपका cytoplasm is then divided into two and your organelles are shared out. Is this clear about the mitosis cycle? Any questions? Okay. Now let's talk about telomeres. हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पढ़ा था. Now why is this important? Because this links into the second part of this chapter, that is about cancers and mutations. So telomeres क्या होते हैं? They are region of repetitive nucleotides. ये वो length of DNA होता है that will not essentially be coding for any protein. ठीक है, तो इनका रोल क्या होता है कि they prevent loss of gene at tip of your chromatids because they have a linear structure. तो obviously जब आप उसको replicate करते हो, what happens is कि your DNA replicating enzyme actually stops a little before हो रहे होते हैं. तो how did they adapt कि they form telomeres which are repetitive nucleotides जो आपके chromatid के end पे. तो अब वो जो आपका loss हो रहा है, that isn't any essential gene that would have been coding for a protein, rather just the telomeres आपके shorten होते जाते हैं. ठीक है,
लेकिन बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस डीएनए रेप्लिकेटिंग एंजाइम का जो ये फंक्शन होता है इस तरह ड्यूरिंग योर एस फेज, what happens is they will get shorter over time, and few bases of telomeres are lost at each mitotic cell cycle. Eventually, as we get older, your telomeres will run out and the cells become inactive, which leads to disease. Now, telomeres can be repaired. That is via an enzyme known as telomerase. लेकिन telomerase फिर आप तो फिर इस तरह कहोगे कि अच्छा फिर तो हमें कभी एज ही नहीं होना चाहिए, because if our telomerase is functioning, so then why are we still aging? Because aging is caused by loss of telomeres. So why are we still aging? अगर telomerase इसको रिपेयर कर सकते हैं. What do you guys think? No, I'm saying why is it for replacing dead cells? Question सुनो, मैं कह रही हूँ कि आप तब बूढ़े होते हो जब आपके टीलोमेरेज रन आउट हो जाते हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि टीलोमेरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो रिपेयर करता रहेगा टीलोमेरेज को, तो टेक्निकली तो टीलोमेरेज को रन आउट नहीं होना चाहिए. तो देन व्हाई डू वी end up getting older? Why do our telomeres still run out? टीलोमेरेज असल में कभी वो मतलब कि यस आई नो कि एंजाइम जो होते हैं वो स्लो डाउन, इट्स नॉट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, इट्स एन एंजाइम. ठीक है, telomerase की production starts slowing down with age. That's incorrect. What happens is your telomerase, by the way, they're never active in your human body cells. कि कहाँ पे active होते हैं? These are active in your stem cells and your cancer cells. तो stem cells जब तक produce होते रहेंगे उसमें telomerase होता है. आपके normal human body cells में नहीं होता है, because normal human body cells में नहीं होगा. जैसे आपकी skin, तो your skin will start to get wrinkles and all of that stuff. Okay. Now, this leads me to our second point, that is stem cells. Stem cells are undifferentiated cells, and because of our friend telomerase, they are able to continuously divide via इनकी डिवीजन रुकती नहीं है. Why? Because telomerase present है ताकि आपकी telomerase ना shorten हो. जब stem cells divide होते हैं, it can produce a cell जो differentiate हो जाता है या specialize हो जाता है for a specific function. So what do stem cells, इनका role क्या होता है usually? कि they form cells that can differentiate and divide to give a continuous supply of tissue repair and growth. Okay. अब हमारे पास कुछ levels होते हैं, जितने आपके that is based on the division and like differentiation levels. ठीक है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? Levels of stem cell potency. The first on our list is totipotent. Now, totipotent stem cells are those stem cells that can differentiate into any cell type found in your embryo. फॉर एग्जाम्पल कि वो सेल्स होंगे जो आपका प्लेसेंटा बनाते हैं. जब आपका क्या कहते हैं zygote is formed during fertilization, your egg cell is totipotent because it will keep on dividing और आपकी human embryo development होती है. ठीक है, is totipotent clear? Totipotent stem cells because it can divide into any cell. For example, it can form a placenta. आपकी human body development होती है, पहले तो सिर्फ एक egg होता है, then it starts to develop all these features. So आपके किसी भी cell type में it can differentiate. Is totipotent clear?
Guys, are you with me? Okay. Next is pluripotency. Pluripotent stem cells are those embryonic cells जो सिर्फ differentiate हो सकते हैं into any cell type that is found in your embryo. ठीक है? But are not able to differentiate into extra embryonic cells. So everything that is outside your embryo, उसके अंदर वो differentiate नहीं हो सकते. ठीक है? And then last is, for example, your pluripotent cells क्या होंगे कि they can form your क्या कहते हैं inner mass cells. सही है? लेकिन जो totipotent है वो क्या होगा, वो आपके oocyte से blastocyte के अंदर form हो सकता है. These are terms that you don't need to know, but that's just to put it in context. Whereas multipotent क्या होता है? These are adult stem cells. सही है? कुछ differentiation और कुछ potency जो है involved with your embryonic stem cells, they have lost that. However, they can differentiate and specialize into your, for example, digestive tissue, nervous tissue, and your cardiac tissue. Are the stem cells की potencies clear? All of you? Wait, my chat box a second. Okay, you did not understand the second one, that is pluripotent. अच्छा, pluripotent क्या होते हैं कि they can develop into all of your cell body के types. हमने क्या बोला था कि totipotent they can develop into any cell type that is found in your embryo as well as your extra embryonic cells. So they can form your entire organism. They can also form your placenta. Whereas pluripotent वो stem cells होते हैं जो develop होते हैं into almost all body cell types, लेकिन ये प्लेसेंटा नहीं फॉर्म करते. दैट इज योर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू. प्लेसेंटा क्या है? एम्ब्रियो के बाहर होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक है. ठीक है? ये वो नहीं कर सकते. दे कैन फॉर्म योर ectoderm, which then ultimately forms your skin and nervous system. They can form your endoderm, which forms your digestive tract. और multipotent क्या होते हैं? They are the more specialized हो जाते हैं. ठीक है? So as you go down your chain of potency, आपकी specialization अब बढ़ जाती है. अब क्या होगा कि they can form, for example, your red blood cells, your white blood cells, your platelets. तो क्या होगा कि pluripotent on one hand when it's forming just like your big आपके जो 3 germ layers, which is ectoderm, mesoderm, and endoderm. ठीक है? That means they're forming body cell के types. They are unable to form your placenta. और multipotent क्या है? They can form your white blood cells, red blood cells, platelets, जो आपके अंदर है अभी. इसलिए हम लोग कहते नहीं है कि जिन लोगों को ब्लड कैंसर होता है हम अक्सर उनको स्टेम सेल्स इंजेक्ट करवाते थे ताकि दे कैन फॉर्म रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. अब इज इट क्लियर? प्लूरिपोटेंट. Okay. Now, the last part of this topic what is cancer, guys? Cancer क्या होता है? It's a very common colloquial term. What is cancer? Uncontrolled cell division. Good job. तो आपके पास uncontrollable mitosis होती है. And why? Because your cell cycle, especially your interphase
is shortened. Your checkpoints are no longer controlled. Your tumor suppressor genes are mutated and turned off. आपके पास high level of telomerase होता है, that indicates your cancer. Now, a question that is very frequently asked is, suggest why tumor cells produce high concentration of telomerase. Why do cancer cells produce high level of telomerase, guys? Good job. So that they can keep on dividing. क्योंकि हमने कहा है कि cancer is uncontrollable mitosis. अब cancer स्टार्ट कैसे होता है कि it starts जब आपके पास क्या कहते हैं म्यूटेशन होती है in your gene that controls your cell division. So the mutated gene आपका proto-oncogene basically होता है. It turns into oncogene. जो switch on हो जाते, these are genes and that will start your cancer. ठीक है. प्रोटो ऑन्कोजीन आपका एक नॉर्मल जीन था, लेकिन जब वो म्यूटेट हो जाता है दैट फॉर्म्स योर ऑन्कोजीन एंड देन इट इज स्विच्ड ऑन. और आपके दूसरा जीन दैट इज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स दैट नॉर्मली एक्ट अगेंस्ट कैंसर, दे आर स्विच्ड ऑफ. नाउ accumulated mutations क्या करती हैं? Over time what happens is your accumulated mutations, they can cause certain concerns. The first thing is कि your cancer cells के टीलोमेरेज एक्टिवेट हो जाते हैं, so they can divide indefinitely. You have loss of function, form a tumor. This mass of that is forming, it does not respond to whether it is intracellular या extracellular signals कि भाई stop हो जाओ, रुक जाओ division अपना. There is no programmed cell death. Your immune system does not recognize the cell as foreign. तो immune system भी इस पे काम करना छोड़ देती है. And usually क्या होता है, your mitosis जब आपके in order to prevent crowding of cells, whenever two cells come in contact, your mite inhibition that happens. They will continue to divide, and this is because of the accumulated mutations that have happened. Now, what are some of the factors जो increase कर सकते हैं आपके cancer को? Those are known as mutagens. Mutagens क्या होते हैं? These are the substances that cause mutation. Now, for example, आपके पास होता है UV light. That's why we say कि अगर आपका high UV index है तो wear sunscreen, वरना आपके पास क्या हो जाता है, आपको skin cancer हो जाता है. Carcinogen are specifically cancer causing substances. ठीक है. Now, remember one thing. Not all mutagens are carcinogen. सारे mutagens that cause mutation, it isn't necessary that all of them will form cancer. Okay. Now, two types of or carcinogen में आपके पास example क्या होते हैं? For example, smoking. Now, two types of tumors that you need to be aware of. एक होता है आपका benign, and second is malignant. Benign क्या होता है? It is still, it does not spread.
from your site of origin. Whereas malignant, it spreads through your body, through your blood and your lymph. It invades and destroys other tissues and can result in secondary growths. So अक्सर क्या होता है कि अगर benign है तो वो कोई हमारे पास इतना खतरा नहीं होता, but if it's malignant, that means it's going to spread across your body, then that is a danger. Okay. And with that, is this clear? We are done with chapter 5. Okay, chapter 6 is very easy. We have already covered thoda sa about chapter 6. A few things that you guys need to know about chapter 6 is क्या कहते हैं, your transcription, RNA processing, translation, and semi-conservative replication. So let's begin with semi-conservative replication that happened in your, as we talked about, S phase में होती है. That is in your interface. So what is semi-conservative replication? नाम से पता चल रहा है कि आपके एक स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व हो रहा है, आधा इज कंजर्व्ड एंड द रेस्ट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड. So what happens is your DNA double helix unwinds via your helicase that breaks your hydrogen bonds between your strands. Both, अब आपके पास क्या आ गए, दो different separate strands आ गए. Both of these strands will serve as templates. Your free activated DNA nucleotides हम उन्हें activate करते हैं by adding 2 additional phosphate groups. अब these bases of these activated nucleotides जो होते हैं, they form hydrogen bonds with bases on each exposed parent या template strand. And these DNA strands will form hydrogen bonds on the basis of what base pairing? Complementary base pairing. And tell me ke kitne your adenine will bind with guanine and your thymine and your guanine will bind with cytosine. Now, DNA polymerase जो आता है, it will come and it will attach to each of these 2 separated parental strands. To catalyze your phosphodiester bonds. ठीक है. Now, this is usually synthesis आपकी कौन सी डायरेक्शन में होती है? 3 to 5 या 5 to 3? सिंथेसिस कौन सी डायरेक्शन में करते हैं हम? फाइव टू थ्री. आपका डीएनए पॉलीमरेज, आपका क्या कहते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल सॉरी जो है वो हमेशा 5 to 3 बनता है. यस, गुड जॉब जरूरी है हिंदी का. तो व्हाट हैपेंस है, अगर आपके पास 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक 3 to 5 था ऑब्वियसली और दूसरा फिर क्या रन कर रहा होगा 5 to 3. इस पे तो आराम से हो गया आपके पास 3 to 5 वाले पे. ठीक है, आपके पास एक स्मूथ उसमें क्या कहते हैं, आपके पास एक स्ट्रैंड बन गया. ठीक है. However, what will happen in 5 to 3?
आपका डीएनए पॉलीमरेज तो हमेशा क्या सॉरी योर डीएनए मॉलिक्यूल विल ऑलवेज बी फाउंड इन द 5 to 3 डायरेक्शन, तो ये तो ऑपोजिट जा रहा है। तो क्या होता है कि योर डीएनए व्हाट हैपेंस इज इस स्ट्रैंड में योर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड इन sections and this is known as form the lagging strands और इन फ्रैगमेंट्स को इस स्ट्रैंड को हम ज्वाइन करते हैं बाय द एंजाइम known as DNA ligase and it results in दो DNA molecules each consisting of one original strand and one newly synthesized strand. Clear? Okay. Is semi-conservative replication clear, guys? और ऑल्सो जो पहला वाला स्ट्रैंड है जो ये वाला बन रहा है, ये कौन सा स्ट्रैंड होगा? ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा फिर नेचुरली। ओके, let's look at proteins transcription. Transcription क्या होता है guys? What is transcription? आप convert करते हो your DNA into synthesis actually takes up 3 steps. Transcription. Second is RNA processing, where your mRNA is modified in your nucleus when it's passing through your nuclear pores. And third is translation. Okay, transcription क्या होती है? क्या इसके steps होते हैं? अब DNA से बन रहे, obviously DNA is double helix. सबसे पहले as usual whenever DNA is involved you will unwind its double helix. How? Using which enzyme? अभी बताया कौन सा enzyme, जल्दी बताओ सारे. 5, 4, 3, good job. Helicase. Helicase enzyme will break your strands. ठीक है, your दो DNA strands जो हैं वो separate हो जाएंगे. अब सिर्फ एक strand is used as template. This is the difference. पहले वाले में क्या था? सेमी कंजर्वेटिव में obviously आप दोनों strands यूज कर रहे थे. यहाँ पे सिर्फ one strand would be your template strand, your transcribed strand, क्योंकि हमें एक ही strand के अंदर वो आपके पास genes होंगे that would be coding for the protein or the क्या कहते हैं amino acids that we need. ठीक है. Now, free activated RNA nucleotides will start forming hydrogen bonds with bases on DNA template strand according to your complementary base pairing. आपका RNA polymerase will come and attach to this template and will join the activated nucleotides, RNA nucleotides, together via your phosphodiester bond. ठीक है, pretty easy. अगर आप लोगों को semi conservative याद है and you know कि transcription होती क्या है, you can continue with this. Now, this is forming a pre-mRNA. इसकी अब modification होती है when it passes through your nucleolus. What happens is your introns that are non-coding, they are spliced via spliceosome, and your exons are joined together, and this forms your mature mRNA. Mature mRNA will go onto your ribosome and your translation will occur. That is, आप क्या बना रहे हो अब? mRNA into a polypeptide chain. So your mRNA comes and it will bind to your large subunit at ribosome.
स्टार्ट आपकी ट्रांसलेशन कब होगी? व्हेन देयर इज द स्टार्ट कोडॉन ऑफ योर mRNA present, and that is your AUG, and it codes for methionine. What is something else that is specific about methionine besides it being a start codon? What is something else that we know about methionine, Mike? What is something else that we know about methionine? Okay, besides it being a start codon. No, what else? Methionine has sulfur, so it forms disulfide bonds. Okay, आप लोगों को कल की क्लास में बताया था. अब tRNA क्या करता है? स्पेसिफिक tRNA will bring specific amino acids, और उसके एंड पे क्या होते हैं? आपके एंटीकोडॉन्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करेंगे विद द कोडॉन्स ऑन mRNA by forming hydrogen bonds. आपका सेकंड आ जाता है tRNA, and it does the same thing. It brings another amino acid and binds with the very next codon on the mRNA. ठीक है? Now, two tRNA at this point are holding the amino acid in place side by side. ठीक है? And at the same time, these two tRNA are also bound to your ribosome. अब एक आपका एंजाइम होता है in your ribosome, that is peptidyl transferase, जो कैटलाइज करेगा फॉर्मेशन ऑफ योर पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन द टू अमाइनो एसिड्स. जो ही आपका बॉन्ड बना, आपका पहला वाला tRNA हट जाएगा. योर राइबोसोम विल मूव along one codon. Next step पे गया in the 5 to 3 direction. Your previous tRNA detaches and it goes out, it moves away and is recycled. और आपका next tRNA आएगा और आपके अमाइनो एसिड अब सेकेंड वाले के साथ अब थर्ड वाला आपका आ जाएगा. ठीक है? And this keeps on continuing. Okay? Is protein synthesis clear to everybody? Good job. Okay, the last part is mutations. Now हम लोग कब से लगे हुए थे? म्यूटेशन होती रहती है, म्यूटेशन हो जाती है, आपका कैंसर बन जाता है. म्यूटेशन होता है क्या? म्यूटेशन इज अ चेंज इन अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ अ जीन. ठीक है? जो फिर ऑब्वियसली आपके अफेक्ट करेगा अपीयरेंस या ट्रेट, दैट इज योर फिनोटाइप ऑफ योर ऑर्गेनिज्म. दो किस्म की म्यूटेशंस होती हैं. क्रोमोसोम म्यूटेशन, दैट इज नॉट इन द सिलेबस बट यू गाइस स्टिल नीड टू नो. एंड सेकंड इज gene mutation. Gene mutation, it is very important. It's tested in every paper. होता क्या है gene mutation? That is change in sequence of bases in your. That causes what? That will cause obviously altered codons in your, because your your gene will be coding for these codons. तो आपके कोडॉन जो हैं they would be altered in your mRNA sequence. तो आपका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस ultimately in your polypeptide chain is affected. Now, 3 types of gene mutations that we're going to study. The first is base substitution. Base substitution में क्या होता है आपके पास कि आपका एक न्यूक्लियोटाइड is replaced with, आपके पास base substitution then is divided into 3 parts. The first is silent, second is nonsense, and third is missense. Because we know that there are so many codons that can be coding for the same amino acid, so even if आपका एक base substitute हो गया, what happens is it will still code for the same amino acid. इसे हम कहते हैं silent mutation. कोई आपको visible effect change का नहीं पता चल रहा.
नॉनसेंस क्या होता है कि आपका एक बेस चेंज हुआ और एक स्टॉप कोडॉन इंट्रोड्यूस हो गया। एंड मिससेंस में क्या होता है कि योर कोडॉन विल बी कोडिंग फॉर अ different amino acid, and that is because your the reason is because आपके पास क्या कहते हैं your triplet codes they are degenerate, मतलब इतने ज़्यादा आपके codes होते हैं, they can be coding for the same amino acid, इसलिए आपके पास silent produce होता है। Now the second is base insertion and base deletion। insert का क्या मतलब है, आपने let's say अगर कोड था इसमें आपने CAT A CAG हो गया। सो व्हाट हैपेंड इज कि पहले आपका एक ये कोडॉन था, अब एक ये कोडॉन था, अब क्या हो गया, एक आपका कोडॉन CAT है, दूसरा कोडॉन अब आपका ACA हो गया। सो बेस इंसर्शन एंड बेस डिलीशन, इनके रिजल्ट्स क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कौन सा म्यूटेशन होता है, इज द टाइप ऑफ म्यूटेशन that is caused by insertion or deletion of one or more nucleotides that results in an incorrect reading of sequence of your triplets in your genetic code, because there is a shift in your reading frame. Now all subsequent codons then are affected। देखो हमने यहाँ पे सिर्फ एक इंसर्ट किया था, तो अब इसके बाद वाले जितने, अब लेट्स से अगला क्या होता है TAC था, दिस वुड बी द थर्ड कोडॉन, अब क्या बन रहा है आपका थर्ड कोडॉन GTA, तो आपके all subsequent codons are also affected, and it results in a faulty non-functional protein. Now the second result that I can cause is nonsense mutation, कि एक आपका stop codon introduce हो जाता है, which leads to a premature termination of your chain, incomplete. Got it? Any questions on mutation? अच्छा, I have a question for you guys. What if 3 nucleotides हमने एक टाइम पे डिलीट कर दिए, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका, 3 न्यूक्लियोटाइड्स डिलीट कर दिया। नो, क्या होगा, गुड जॉब, गुड जॉब जवेरिया। आपके पास क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन डिलीशन ऑफ वन कंप्लीट कोडॉन, बिकॉज कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, तो आपका एक पूरा अमाइनो एसिड डिलीट हो जाएगा। गुड जॉब। And that is it. We are done with both of these chapters. Do practice their topical papers as well, okay? And if you guys have any questions, let me know. Any questions? Okay. So that is it for today's class. I hope you guys understood it clearly, and good luck with your revision. Take care, Hafiz. Semi